Yes, variation, and then addition or deletion. So write down the next. Mutation. Mutation is a process which causes to form a new genes within a population. New genes within a population during meiosis and fertilization. During meiosis and fertilization. As an error in DNA, replication of error in DNA. It can be also termed as a recombination. It can be also termed as recombination. What is the variation? तो व्हाट काइंड ऑफ, सपोज यदि तुम चेंज हो रहा है तो तुम्हारा क्या क्या चेंजेज हो सकता है? स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, चेंज करोगे अपने स्ट्रक्चर को. हो सकता है यहाँ बारिश होने लग जाए, पानी भर जाए, तो विल स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ व्हाट, मे बी विंग्स, मे बी सम appearances you will try to change. Yes or no? Oh, I said that if I am saying that, listen me carefully, तो आप अपने आप को क्या करते हो, एक इवोल्यूशनरी फोर्स है. क्या है आपका? एक इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन समझते हैं ना, मैकेनिज्म. इसमें एक्सटर्नल एंड internal. Yes or not? Both are. So I said that it is a natural selection. क्या है? It is an evolutionary force that selects among variations. Which are the variations we can have? Appearances. We can have what? Structure, mode of life, behavior. अब खाना मिल गया, बंद हो गया मिलना, हमें एक ही टाइम मिल रहा है, तो slowly our metabolism can reduce. And we can being in a human life like this, what? Possibly our stomach will become smaller. Yes. So I said that some kind of, what I said that we'll try to change, select some among variations. Yes or not? We have to select among variations to what? Natural selection. So ऐसा नहीं है कि we will do all kind of changes. Possibly हो सकता है कि we can do all kind of changes, structure and all. लेकिन एक मेजर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. देयर विल बी इवोल्यूशनरी फोर्स. इवोल्यूशन में क्या बोला था मैंने? इट इज एन मैकेनिज्म फॉर न्यू स्पेसिस. एंड देन व्हेन हम लोग बनकर आएंगे तो इट इज एन मैकेनिज्म फॉर बिकमिंग न्यू स्पेसिस, बट विल थ्रू दैट इवोल्यूशनरी फोर्स. मींस मैकेनिज्म में इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैव टू सेलेक्ट अमाउंट सम वेरिएशंस. स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या बिहेवियर कैन चेंज, और मे बी आई सेड दैट मोड ऑफ लाइफ, एक ही टाइम खाना खाएं, और मे बी आई सेड दैट सम व्हाट इज अपीयरेंसेस. अंडरस्टूड इट? सो दैट इज नोन एज, आई सेड दैट, नेचुरल सिलेक्शन. यस और नॉट? ये वेरिएशंस में से कुछ सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग अमॉन्ग वेरिएशन बाय द इवोल्यूशनरी फोर्सेस, बाय the what is selecting amount by a species is selecting some variations. Species is selecting some variations by the evolutionary forces. Understood? It is known as what? Natural selection under the changing environment, under the influence of changing environment. Understood? So write down what is I said that species
select among variations, a species select among variations under the evolutionary force, sorry, by the evolutionary forces under changing environment, under changing environment. A species select among variations, a species select among variations, a species select among variations by evolutionary forces. Understood? Clear? समझ में आ गया? Yes. And then तो इवोल्यूशन के फोर्सेस के द्वारा सेलेक्ट करना एंड देन देयर आफ्टर जो चेंजेस हुआ इट इज नॉन एज एन आई सेड दैट. तो और उसके लिए हमें क्या करना होगा? बेटर एडेप्टेशन. इट इज एन हमारे लिए एडेप्टेशन था. शार्क फिश के लिए हमने क्या देखा? शार्क फिश को हमने क्या देखा? ये शार्क फिश इज ओनली एन 4-footed एनिमल. द स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड, अपीयरेंस हैज बीन चेंज्ड आल्सो, लेकिन खाने का बिहेवियर तो वैसे ही वैसे रखा हुआ. सो बिहेवियर इज द सेम. यस, possibly we have not studied too high in the shark fish and all, but there is no what? Selection. Natural selection is also there. Variations is also there. Understood? So what are the principles of ecology? I said that. Just tell me. Adaptation क्या है आपका? Yes, what is the adaptation? I said that if I am talking about each organism adapted to its particular adaptation is thus the appearance or behavior, structure, mode of life, and organism that allows to survive in a particular environment, like a neck of a giraffe to eat the food. Variations हमने क्या बोला? Addition और deletion. Understood? Speciation मैंने बोला process by which new species formed, and then evolution is a mechanism which through which new species form. And then mutation, I said that it is an what? Interaction between two different species to give a new genes, to give rise in a new genetic structure. And natural selection, I said that a species selects among variations. अपने शरीर में जो भी वेरिएशंस हो रहा है जीन्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज की वजह से, देन उसमें से सेलेक्ट करना, and then by the which force? Evolutionary forces. Understood? And that is for their best adaptability into the changing environment. तो समझ में आ चुका है evolution. And then sixth one हमने क्या बोला था? Evolution. So what are the definitions? Are clear? Completely okay? Adaptation, variation, adaptation. अभी species ने क्या किया? अभी adaptation, we say variation, and species, speciation, and then क्या किया था? Mutation. And through natural selection, और उसके बाद evolution दोबारा था. तो evolution का definition मैंने पहले ही आपको दे दिया है. Yes है ना? Evolution is a mechanism. Yes है ना? The process through which I said that new species formed, it is known as variation, and then evolution, the mechanism involved to form new species or speciation is known as evolution. Perhaps you are knowing about this. So UPSC can ask what are the question today जो मैंने बोला, what is ecosystem? Define the, listen me carefully. What is ecosystem? And defined ecosystem based on stages of development. Clear? They can say write a short note on ecosystem and stability in a ecosystem. Write a short note on ecosystem and stability in ecosystem. तो हमने देखा कौन सा stability देखा था हमने? Complex stable and which one I said? Simple stable. Understood? अभी और भी हम लोग देखेंगे stability के बारे में. Thereafter we have seen, like I said, that discuss the principles involved in an ecosystem with the case studies. With the case, discuss the principles involved in a ecology with a case study.
विद केस स्टडीज को आप डालोगे तो हाउ कैन यू पुट, यस, कोई केस स्टडीज है आप लोगों का जिसमें आपने देखा हो कि वेरिएशन इन द स्पेसिस? हाँ, यस टेल मी। जिराफ, और क्या? हाँ, जाके केस स्टडी तैयार करो आप लोग। और एक शार्क फिश का मैंने बताया, यस, जो आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एंड देन प्रिपेयर सम केस स्टडीज, उसमें आपको क्या दिखाना है? एडेप्टेशन, याद है, समझ में आ चुका है ना एडेप्टेशन? यस। एंड देन आप अपने अडेप्ट करते हो चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से, स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, ये लाते हो, वेरिएशंस लाते हो। एंड देन वेरिएशंस को आप इन्वॉल्व करो। देन यू हैव टू इन्वॉल्व विच वन आई सेड दैट, स्पेशिएशन, कि स्पेसिस, नया स्पेसिस बना, शार्क इज बिकम एन न्यू स्पेसिस, इट इज एन पासिंग थ्रू द इवोल्यूशन प्रोसेस। एंड इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज डालो। और देयर आफ्टर वी हैव सीन विच वन आई सेड, म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन से कई आप एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हो। इट इज़ एन इंटरब्रीडिंग कंसेप्ट, यस और नो? एंड आज भी हम लोग इंटरब्रीडिंग कंसेप्ट पे बहुत सारा देख रहे हैं, यस। एंड वी हैव सीन द, if you'll go and see in America, we have an Africans are the red Indians are there, and then European race is there. वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेशन के एग्जाम्पल नजर आएंगे। So we can be able to see several mutation examples over there, जहाँ पे different genetic species muting and then gene get error in their structure. So that is a replication of error, mutation, and then you have to give some example of, I said that, कौन सा आप एग्जाम्पल देंगे? एक अभी हमने बोला नेचुरल सेलेक्शंस, और नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन इज व्हाट? इट इज, आई सेड दैट स्पीसीज सेलेक्ट्स अमॉन्ग वेरिएशंस by the which evolutionary forces. Understood? I said that pioneer community, you know that when I said that first time rock surface was in the process of formation, when the rock system was in the but what is the ecological succession? Definition of ecological succession सब कुछ तो बता दिया, लेकिन what is the ecological succession? Simple. It is a process in which there is a changing one form of plant and flora community to the another form of what? Flora and fauna communities. What is a changing or transformation? It is an, I said that, transformation of one kind of flora and fauna community to another form of what is in a flora and fauna community in a given geographical region. That is an ecological succession. Understood? उसमें से कौन कौन सा सक्सेशन है? आई सेड दैट, सो व्हेन इट इज इन अ पायनियर कम्युनिटी, व्हाट इज द पायनियर कम्युनिटी? आई सेड पायनियर कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड community, for the first time evolved flora community and some fauna community on a bare rock surface, on a bare rock surface, on what is in a new evolved deltaic zone, on a new evolved mangrove forest, on a new evolved sand dune. Understood? I said that in that one the primary growth of what? Flora and I said that fauna. Understood? और flora सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि flora will first grow, then the fauna will depend what is started growing on it. Understood? Understood it? So I said that primary succession, what is I said that pioneer community क्या करता है? प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? इन द प्राइमरी सक्सेशन थ्रू द पायोनियर कम्युनिटी, primary succession through the primary community in which the flora and fauna community, I said that on a bare rock surface, on the new evolved deltaic zone, on the new formed wetland, on the new formed mangrove forest, on the new developed sand dune. Understood? That is known as, I said that, pioneer community. And then there is a first stage of the evolution of what? Flora and fauna. That is in a primary succession. That is known as what? Primary succession. यहाँ पे कोई भी चीज, that is a favorable condition is not there to grow it, but they are growing. And then
Thereafter, slowly and slowly, over the thousands of years or hundreds of years, they grow into climax community. They grow into climax community. And then stages through which flora and fauna, the stages through which flora and fauna has converted into climax community, converted into, I said that climax community, it is known as seral community. It is known as I said there is an